Let's start with the output devices. What are output devices? Output devices is any hardware component that convey information to a user. The different types of output devices are monitor, printer, speakers, data projectors, smart boards. These are the output devices. Now, when we give input to the computer, they also provide output. So where they show the output? So where we get the output, these machines are called output devices. Now first is monitor. We can see our output in the monitor. Clear? Monitor is an output device that looks like your TV screen. As you all know, information on monitor exists electronically and is displayed for a temporary period of time. कुछ time के लिए ही we can see the output on the monitor. For this reason, information on the monitor is also referred to as soft copy. जो हमारा आउटपुट मॉनिटर में आता है, वी ऑल्सो कॉल्ड इट सॉफ्ट कॉपी. मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज स्क्रीन, डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक्सेट्रा. स्क्रीन भी कहते हैं हम, डिस्प्ले भी कहते हैं हम, वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटर. Printer is an output device that gives you the output on a physical medium such as paper called printouts. As you all know, we also get the printouts. So from where we get the printouts? We get printouts from the printers, and the information we get as a printer on a paper is called hard copy. Scanner, with the scanner we give information into the computer, so that's why it is a soft copy, and we get the information on the paper, that's why it is called the हार्ड कॉपी. जो हमें पेपर में इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज द हार्ड कॉपी, एंड जो हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे मिलती है दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी. क्लियर? नाउ there are two types of printer, that is the impact printers and non-impact printers. This is the category of printers. Two categories of printer, that is impact printer and non-impact printer. So what is impact printers? Printers that have direct contact between printer head and paper. Means printer के बीच में और पेपर के बीच में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो दैट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर, और जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, दोज दैट डू नॉट हैव द डायरेक्ट कांटेक्ट, that is called the non-impact printers. Clear? Now here are some types of printers: laser printer, inkjet printer or dot matrix printers. There are three types of printer. First one is laser printer. The printer is a non-impact printer that uses laser technology to print text or images on paper. It gives the best quality output and is expensive. This is the in which category it comes? Laser printer, it comes in the non-impact printer. Why? Because it uses laser technology. Laser technology का use करता है to print text और images on paper. कोई भी text, कोई भी images को print करने के लिए it uses laser technology. It gives the best quality output. इसमें हमें बहुत अच्छा quality output मिलता है and it's very expensive. The speed of this computer is given in ppm. ppm means pages per minute. Clear? Now next is inkjet printer. Now inkjet printer is also a non-impact printer that output text and images by spraying ink on the paper. अब हमें यहाँ पे अब again there is no direct contact because paper के ऊपर spray हो रही है ink. ठीक है? inkjet printer produce the text and graphics in both black and white and colored. inkjet printer से हमें black and white graphic भी मिल सकता है और colored भी मिल सकता है. The speed of this computer is given in LPM, यानी कि लाइन्स पर मिनट. यहाँ पे लाइन्स पर मिनट के हिसाब से प्रिंट होता है, यहाँ पे पेजेस पर मिनट के हिसाब से. दैट्स वाई दिस प्रिंटर स्पीड इज वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दिस प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट कंटेन्स मूवेबल प्रिंट हेड विद पेन्स दैट स्ट्राइक द रिबन प्लेसिंग अ डॉट ऑन द पेपर. नाउ दैट्स वाई इट इज इम्पैक्ट, क्योंकि अब इसमें पेपर में और प्रिंटर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है. दैट्स वाई इट इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर. डायरेक्ट डॉट्स स्ट्राइक हो रही हैं. These printers are less expensive. ये कम एक्सपेंसिव होती हैं, स्लो इन वर्किंग, वर्क भी बहुत स्लो करती है, एंड बट आर वेरी नॉइजी, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइजी होती हैं. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इज CPS, यानी कि करेक्टर्स पर सेकेंड. करेक्टर्स पर सेकेंड के हिसाब से इसमें वर्क होता है. दैट्स वाई इट्स स्पीड इज टू स्लो. नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर्स. एज यू ऑल नो, we listening songs on the speakers, so we get the output. So the speakers are output devices that produce music, speech or other sounds that your computer generates or processes. Now next is data projector.
this is the data projector. A data projector is an output device that projects the data being displayed on a computer screen. डायरेक्ट जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू हम देख पाते हैं on a large screen so that the audience can see the image clearly. Like we also have a projector in the lab, so on the large board we can see the computer screen clearly. That is the data projector. And this is the smart boards. A smart board is an output device that displays the image on a connected computer screen, usually via data projector. Notes written on it can be saved directly on the computer. जो भी notes उसमें लिखे जाएंगे directly save होंगे computer में. These are used frequently in classrooms as a teaching tool and to enhance the delivery of presentations. The smart board can be hung on a wall or mounted on a stand. Stand पे भी हो सकता है खड़ा, और इसको हम wall पे भी टांग सकते हैं. This is the work of smart board. I think I'm clear to you. In next video we'll start with the storage devices. Thank you.